So we are going to start this session. So good evening, one and all present here, and good morning, Professor Caroline, because it's morning there. And good evening, our Indian participants and faculty members and this group of intelligentsia in the field of sustainable management. We welcome you. I am Dr. Parvesh Lata, Head School of Education, moderator of today's webinar on sustainable development, envisioning a better tomorrow. And I feel pleasure to welcome you all. So today we have among us very eminent personality, Professor Emeritus Caroline Hesse and respected Dr. Ram Sharma, Head Department of English, JVPC College, Pagpat, India, and he is international editor and poet. So I would like to start the session with a beautiful poem that is written by Dr. Ram Sharma because he is international poet, and the poem is from Lamp of Love. This is by Dr. Ram Sharma. Sweet melodies of birds, full of morning breeze, singing of trees in spring, touched my mind to something. Through the blanket of the yesterdays, where new melody of the dawn, little drops of the dew will satisfy your mind, and opened every field of hopes, awake, arise, and walk across the journey. Spread new energy of youth by piercing the fog of desperation. Your mind will win now by blossoming new melody of life. Yes, please, participants are requested to off your mic. मैं दूसरी गाड़ी के डोर पे चाबी लगा रहा हूँ। खुल क्यों नहीं रही Off your mic, please. रिमोट का सेल वीक था तो रिमोट से खुल नहीं रही। Ma'am, please ask the put her on mute. Yeah, okay, I think it's done now. Okay. Sorry for the inconvenience. Yes, sorry for inconvenience. So there's a poem that awake, arise, and walk across the journey. Spread new energy of youth by piercing the fog of desperation. Your mind will win now, and by blossoming new melody of life. And it's a very beautiful poem. When I read this, and I feel very good. Dr. Ram Sharma is an accomplished poet and writer, working English and Hindi in the field of literature, and he has added many feathers to his cap. And as a student, he has been exceptionally brilliant student from class first to MPhil, and he did his doctorate on postmodernist trends in Indian novels in English, a study of Anita Desai, Arun Joshi, Amitav Ghosh, and Vikram Seth. So he is a renowned poet, critic, reviewer, and translator, and his poetry is indeed of very high order, which is read throughout the world. He has 85 research papers published in esteemed journals of India and abroad, including Poets International, Wish, Rock Pebbles, Indian Book Chronicle, etc. And beside this, his work has appeared in web journals like News India, Literary India, Creative Sapling, etc. And his poems are showing presence in foreign e-journals also, like poem hunter.com, voicesnet.com, Atmal Lees, and he has, to his credit, 8 poetry volumes. And along with this, he has also contributed editing on 32 anthologies books, which is very good in English literature. And he has attended more than 50 national and international seminars and presented his papers with us. He is editor-in-chief of 2 international journals, Ruminations and Glimpses. So we welcome you, Dr. Ram Sharma. Now I would like to invite Dr. Ram Sharma to welcome Professor Caroline. We also welcome Professor Hesse. Now I would like to invite Dr. Ram Sharma to read the profile of Professor Caroline. Yes, please welcome. Ma'am, please unmute the participant. Yes, please. Ma'am, am I audible, ma'am? Please unmute the participants or leave them out from the meeting. Yes, sir. Are creating the leave them out. Yes, please, sir. I click on the unmute themselves. Leave them out of the meeting if there is a noise from any participant. Yes, please. Because they are not understanding. This is the international professor we are having from US. They are not understanding the importance of the professor. Yes. Yeah, today we are having Professor Caroline Hesse. She
is the first woman who has done a PhD from Stanford University in mechanical nuclear engineering. And later on, she taught at Massachusetts Institute of Technology, MIT, for 10 years. And later on, she went to Iowa State University, and she has been there a professor. And she is also involved with so many other activities like Chernobyl nuclear tragedy. She went in Russia and she inspected the nuclear reactors, and in tsunami in Japan, she also went there in Japan to inspect the nuclear reactors. She is also associated with Home Security of USA, and she also advisor in so many other commissions of United States. And she is a Democrat. Her mother has been the mayor of Santiago, the famous city of USA. And she has a great love for India and Indian culture, and she do yoga, and her guru is Paramahans Yogananda. So it's really our privilege to have a speaker like Caroline Heising, though her health was not good in the previous month, but she agreed to come, though it is very early morning in USA, but she never refused, because together we did so many webinars during the COVID-19 period last year and before last year. And we do hope that we together will do something for the, not only for the students, for the scholars, for the professors. We will certainly go ahead with our thinking of peace and love. So it's really our great privilege, and I thank GD Goenka University for providing us this opportunity to speak on sustainable management, envisioning a better tomorrow. And I also thank Dr. Pravesh Lataji, who is moderator of today's webinar. So now I hand my mic to Dr. Pravesh. Yeah. Am I audible? Hello? Hello? Yes, sir. Sorry, sir. My mic was not on actually. Sorry. And I was speaking. Yes. Now you are audible, sir. You are completely audible. So thank you, Dr. Ram Sharma. And now I would like to welcome on our behalf Professor Caroline Hissy, that is Professor Emeritus Industrial and Manufacturing System Engineering, and she received her BS degree in Applied Physics from the University of California in San Diego, and her MS in 1975 in Nuclear Engineering, and PhD in 1978 in Mechanical Engineering. She has vast experience from Stanford University, and she has been employed as a postdoctoral research associate and assistant professor in nuclear engineering at Massachusetts Institute of Technology. So she is currently a professor emeritus of industrial and nuclear engineering at Iowa State University, and along with this, she is co-founder of Universal Peace Institute, Vista San Diego country, and she is self-realization fellowship holder, performed research in PRA, reliability, safety, and quality engineering, and there are so many feathers in her cap, and she has obtained numerous grants and contracts, and has presented and published over 200 papers, and she currently teaches courses, conduct researches in reliability, risk analysis, quality control, and management. And she is supporter of most fundraising events for local, state, and national democratic candidates. So we do a warm welcome Professor Caroline Hissy, and our discussion is aimed to make people aware about this this environmental degradation, because education and public participation that may change and improve the quality of environment, and the influence of human activities on the climate to meet these needs is undeniable. So if we will not take this climate change into account, it will surely set back this achievement of 17 sustainable development goals. So now we want to hear from you more, Professor Caroline. So I would like to invite Professor Caroline, over to you, Professor Caroline, for the elaboration on the concerned theme. Yes, over to you, Professor Caroline. I think her mic is, you have to unmute her. Caroline, you unmute your mic.
You have to unmute. Okay. Yes, now you are audible, ma'am. Okay, now I'm okay. You can hear Yes, me? yes, now you are audible. Okay, thank you. Dhanyavad and Pranam, I'm happy to be with you today to talk about sustainable management. And I always add in world peace. So I'm honored to be with you. And I wanted to talk about sustainable development and management. And it's defined in the 1987 Brundtland Commission report as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. So basically, we're talking about future generations are considered as important as present generations. So that means the present equals the future, which obviously is not happening in the world today. And the young people of today have to look forward, and they see a calamity coming with climate change, and this is impacting all the young people. So what we're trying to do with sustainable management and development is to develop means to change the economic system so that the economic system is not biased toward the present. The Sustainable Development Goals, also known as the Global Goals, were adopted by the United Nations in 2015 on a universal call to action to end poverty, protect the planet, and ensure that by 2030, all people enjoy peace and prosperity. And we're in the year 2022. I don't know if in 8 years we're going to achieve that, especially when we have outbreak of war. So the three advantages of sustainable development are: one, it helps to ensure a better life for present and future generations. Again, we want to focus on what's going to happen to our young people. Second, it lowers the impact on the environment by reducing air, water, and soil pollution. And third, it helps in ensuring long-term economic growth. So if we can move away from fossil fuel, use electric vehicles, that's an example of achieving long-term economic growth. By changing the system away from fossil fuels and trying to use solar energy and sustainable energy. At the environmental level, sustainability prevents nature from being used as an inexhaustible source of resources and ensures its protection and rational use, because there's only so much resources available in the world, and we have a growing population of over 6 billion people now on the planet. So there's not enough resources, and there's now conflict over water, over oil, over all of the natural resources. Sustainable development is an organizing principle for meeting human development goals while also sustaining the ability of natural systems to provide. And so conservation is very important. I know in India, Mr. Modi was setting up a program to plant trees. And that's a good thing, to plant trees, because trees are essential to the environment and they absorb the carbon dioxide. So how can we achieve sustainable development? Many of the challenges facing humanity, such as climate change, water scarcity, inequality, and hunger, can only be resolved at a global level and by promoting sustainable development, a commitment to social progress, environmental balance, and economic growth. The UN approved the 2030 Agenda, which contains the goals, a call to action to protect the planet and generate the global well-being of all people.
These common goals require the active involvement of individuals, businesses, administrations, and countries around the world, including India. So environmental sustainability, this prevents nature from being used as an inexhaustible source of resources and ensures its protection and rational use. So aspects such as conservation, investment in renewable energy, saving water, supporting sustainable mobility, and innovation in sustainable construction and architecture contribute to achieving this environmental sustainability. So the United Nations has set 17 social sustainability goals, and the first is to eradicate poverty and hunger, guaranteeing a healthy life. 2, access to basic services such as water, sanitation, and sustainable energy. 3, inclusive education and decent work. So I'm not going to read all of these, but the focus is on reducing inequality in the world and combating climate change. So climate change is the primary environmental challenge of the 21st century. And we know that climate change is due to combustion of coal and use of fossil fuels. So as I mentioned before, if we can get away from using fossil fuels, and if we can use solar energy, wind power, and we can use electric vehicles, that will help reduce the carbon dioxide. Unfortunately, right now, I think all of you are aware there's a major war going on between Russia and Ukraine that in Europe. And this is a very serious situation. So how does conflict and war impact sustainable development? Actually, war damages the environment, especially in the countries where war outbreaks. And you can see this on the media every day. There's horrible pictures of what war is doing to the Ukrainian people, destroying their lives. They can't access healthcare and education, incredible damage to their environment, and increased poverty. So we're living in very uncertain times right now. And in order for the world to achieve sustainable development globally, war and conflict must be minimized, if not completely eliminated. So environmental damage also occurs before conflicts, because when you spend a lot of your income in countries developing your military forces, that consumes vast quantities of resources. If you're building up all of your weapons and you're using metals and rare earth elements and water and in building military vehicles and aircraft, all of these military expenditures could have been used to clean up the environment. And the militaries use a lot of oil. And so they are one of the major emitters of carbon dioxide. So the world's largest militaries, and of course the United States has the largest military, but Russia is the second, and China has a growing military. Even India has a growing military. So all of these military forces are consuming resources and income and money. So that's an issue that the young generation needs to focus on, is how do you establish world peace? And that will be necessary to solve all these problems. So I always tell the young people, you're going to have to solve these problems, and don't expect Elon Musk to solve all your problems for you, because he won't. And do not try to move to Mars. This Elon Musk is talking about moving to Mars, and a lot of young people in America
They're talking about moving to Mars. Well, that's to me insane, because we have only one planet that can sustain life, and that's the Earth, and we're all part of the Earth. We breathe the atmosphere in and out. And with my yoga practice, I know through meditation, we breathe in, we breathe out. We learn to calm our bodies this way, and meditation can help in achieving world peace. So that's pretty much what I was going to also mention. Green engineering. I think that that's a field engineering students can go into to develop eco-friendly houses and eco-friendly buildings, and that's a growing field. I'm very amazed by the solar energy development that's been going on, and I know that in a lot of new construction, they're using solar energy panels. So what can individuals do? You can stop buying products from exploitable companies. You can go natural and use sustainable products, especially organic food, which India is doing already very well, because you have always had a large organic farming community in your villages. But, you know, the primary thing India has done is provide a philosophy, an ancient Vedic philosophy that says we need to control our greed. And many of the luminaries of India have talked about limiting our consumption. That's a tradition in Indian culture, to limit consumption. Most Indian Hindus, for example, are vegetarians. They're not eating meat, and they're not consuming large amounts of alcohol, although I know that in the young Indian population, that's changing. So unfortunately for young Indians, you have to look at what you're losing if you go toward a Western model of consumption. Actually, most of the scientists and luminaries are now telling us we need to go back to nature. We need to eat fresh food, eat fresh vegetables. We need to even grow our own food. And in India, you have villages. So you can interact with the village people, and you can develop more relationships to conserve your culture, conserve your land. You have wonderful agriculture, very rich land in India. And so again, Dr. Rama always says the world can change with your laugh. You can also keep your spirits up by staying healthy. And the young people are going to have to solve all these problems, and you're going to have to figure out how to reverse climate change. And you're going to have to do this, or the human race will not survive. It's becoming an existential problem. So young people, especially young Indians, you're very smart. You're all very smart. You're very well educated, and you have wonderful grandparents. The grandmothers of India really impressed me. So what can you do as a young Indian? You can, first of all, not go to McDonald's. Stop going to McDonald's and Pizza Hut, because that's not the right way to stay healthy. You can listen to your grandmothers and learn to cook food in the Indian traditional way, and the Ayurvedic tradition, and all of those health, yoga, and all of those Indian developments for health and spiritual development, meditation, all those things contribute to you as a young person, contributing to solving these problems. So anyway, I expect Indian young people will lead the way to solve all these problems. I've met many Indian students in the United States. They're always extremely smart. They're extremely motivated. They're hard workers, and they're serious. And so I've always admired Indian students and their parents, the Indian parents. And so you just, you need to spread the word, and also
make sure other people know about what India is doing. And social media is a good way to do it. You can develop YouTubes and you can use social media to reach out to the rest of the world, because India has a history, a huge, long history, ancient history of Vedic culture. And so the Vedic culture has all of these principles, and those are the principles that will get us out of this mess that we're in now. So that's where I'm ending my remarks, Dr. Ram. You always say world can change with your laugh. And so smile a lot and be kind to animals. I'm saying that after my heart condition. I'm coming from the heart, and I'm telling all people to smile, be kind, and you've also shipped your animals. And so, Dr. Ram, I'll leave it over to you to talk further. Thank you. Pranam. Oh, sorry, my mic was mute. So thank you, Professor Caroline, for such a nice elaboration you have done on the topic, and namaskar. And very nicely you have elaborated the theme, and really this is a dire need of the time that we should manage all the resources, and you are also doing the things in your country. And there are several questions of the participants also, and I will ask at the end of the session, and we will listen Ram Sharma sir also. So thank you so much, Professor Caroline. Now I would like to invite Professor Ram Sharma sir to speak on the theme. Mr. Ram Sharma sir, please on your mic. Your mic is mute. So please. Yeah, now it is. Yes, done. yes. It's done. Okay, Thank you. Yes. So we will take the question after. Thank you very much, ma'am. Yeah. After that, there will be questions. So first, I would like to thank GD Goenka University, and I'm seeing 37 participants. So 37 जो लोग बैठे हुए सुन रहे हैं, it's really a very tough question before us. If we check our phones, air quality index is more than 170, जो कि 50 होना चाहिए. आज आप अपना फोन सबसे पहले उठा के चेक करें एयर क्वालिटी इंडेक्स. So that would be around 170 to 250. And during the period of Diwali, it goes to 600. That should be 50. If you are not getting the fresh air, so what you can do? My simple question is that if you are not getting the fresh air, what you can do? Even your mind will not work. You will become a robot. आप रोबोट बन जाएंगे. और सड़कों पर मैं देख भी रहा हूँ किस तरह आप ड्राइव कर रहे हैं, जैसे सेंसलेस ड्राइविंग हो रही है, सेंसलेस एक्शंस हो रहे हैं. And it is due to the destruction of nature. I would like to quote US biologist John Mason from John Mason University. His name is Thomas Lovejoy, and he said, intrusion into nature led to pandemic. कि हमने प्रकृति का इतना दोहन, इतना शोषण कर लिया, जिसके कारण ये महामारी उत्पन्न हुई. ये क्या महामारी है? हमने इसे कोरोना का नाम तो दे दिया. ये महामारी हमारे जो श्वसन तंत्र है, हमारे फेफड़े से संबंधित है. और
अगर हमको फ्रेश एयर और पोल्यूटेड एयर मिल रही है तो हमारा श्वसन तंत्र, आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड आवर लंग्स विल बी अफेक्टेड। तो वो तो कोरोना, वी आर ऑलरेडी लिविंग इन दिस कोरोना पीरियड, हम तो उस कोरोना पीरियड में रह ही रहे हैं। देन माय सिंपल क्वेश्चन इज हाउ वी कैन कम आउट ऑफ दिस। अगर हम देखें, वी गो टू द मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली और गुड़गांव, air quality index will be much higher than from my place. I am speaking from Meerut, and here it is still 177, 177 बना हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि जब हमको फ्रेश एयर नहीं, वी आर नॉट गेटिंग फ्रेश एयर, वी आर नॉट गेटिंग फ्रेश वाटर, then what is our future? How we can sustain our lives in the coming years? आने वाले समय में हम नई पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? ये 38 पार्टीज इवेंट के सामने आज एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और हम प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का कुछ उत्तर तक हम जरूर पहुंचे, कुछ रेजोल्यूशन हम बनाएं, कुछ मिलकर प्रयास करें। इसी में हम आगे देखें कि कोरोना जो था, हमने उसे कोरोना नाम दे दिया, लेकिन दैट वाज द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर। हम अगर आप पुरातन अपनी सनातन सभ्यता संस्कृति में देखें तो उसमें नदियों को माता माना गया, गंगा माता हमने कहा, पेड़ों की पूजा की हमने, और हमारी जो वैदिक संस्कृति थी उसमें प्रदूषण नाम का कोई शब्द नहीं था। देयर वाज नो वर्ड ऑफ पोल्यूशन इन आवर एंशिएंट वैदिक कल्चर। It was slowly we started having, we call it a progress, and now we have become so much in tune that everything is thrust upon us. सारी चीजें हमारे ऊपर थोप दी जा रही हैं, हर चीज टीवी से आ रही है कि अब आप जो है 3rd बूस्टर डोज आप ले ले, ये आप जो है आरओ वाटर आप यूज करें, ये आप गोली खाएं, ये कपड़े पहने। आपका अपना दिमाग कहाँ चला गया है? ये प्रश्न ये है कि हम अपना दिमाग क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। अब या इसका कारण ये हो सकता है कि हमें फ्रेश एयर नहीं मिल रही है, हमारे माइंड तक फ्रेश एयर नहीं पहुंच पा रही है, तो हम क्या है, प्रोग्राम रोबोट बन गए हैं। सनातन सभ्यता संस्कृति की आती सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सभी लेट ऑल शुड बी हैप्पी। माय क्वेश्चन इज दैट इन दिस प्रोग्रेस, आर वी सीइंग द हैप्पी पर्संस, और आर वी सीइंग द प्रोग्राम रोबोट्स और वॉकिंग कोऑप्स? हमने कोरोना पीरियड में भी देखा है किस तरह से जो है पति जो है पत्नी को कोरोना होने के बाद ऐसी हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गया, तो पत्नी या बच्चों ने जो है उसकी लाश के हाथ भी नहीं लगाया। ये सब मानव गिरती हुई मानवता के जो हमने रूप देखे, इसका हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है, आर वी स्टिल रोबोट्स और वी आर वॉकिंग कॉप्स और वी आर ह्यूमन बीइंग्स? महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कहा था कि देयर इज ऑलवेज एनफ फॉर मैन्स नीड अपॉन दिस अर्थ, बट देयर इज नॉट एनफ फॉर हिज ग्रीड। हमारे सामने हमारी जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए धरती माता हमें दे रही है, लेकिन अगर जहां तक ग्रीड की बात है, हम पेड़ काट के कमाना चाह रहे हैं और धरती बेच के कमाना चाह रहे हैं, तो उसका कोई अंत नहीं है। वो हम देख भी रहे हैं कि कितनी कॉलोनीज खेतों में कट गई है, कितने जो है हरियाले लहलाते पेड़ काटे जा चुके हैं, और आज ये स्थिति है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी फ्रेश एयर हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। आने वाले समय में ये हो सकता है फ्रेश ऑक्सीजन बूथ बन जाए और 15 मिनट हमको ऑक्सीजन लेनी पड़े और फिर हम आगे काम पे चले। हम क्या कर सकते हैं, ये भी हमें सोचने का प्रश्न है। अगर हम देखें, if we look back 100 years back, we find that there were no such diseases as now we are facing. I was reading this book, Holistic Healing. I would like to quote from this book. This is written by Swami Rama, और वो हिमालयन इंस्टीट्यूट जिनकी ड्रग हिमालयन आयुर्वेदिक ड्रग कंपनी है। इस बुक में ऐसा लगता है कि आज का ही वर्णन किया गया है, दो दिस बुक वाज रिटन 50 years back. I am quoting the first stanza from this book. Our modern civilization claims to be very productive, creative and resourceful, but 100 years ago we did not have many of the diseases that exist today. 100 साल पहले इतनी बीमारियां नहीं थी जितनी अब विद्यमान है। Every day more diseases are being created. अब जो है लगता है हर दिन एक नई बीमारी आ रही है। For although we are alive, the majority of us experience only the art of existing. है हमें लग रहा है कि हम अपना एग्जिस्टेंस बचाने के लिए लड़ रहे हैं, कभी वैक्सीन का 2nd डोज ले रहे हैं, कभी 3rd डोज ले रहे हैं, कभी बूस्टर डोज ले रहे हैं, कभी दवाई खा रहे हैं, कभी कोरोनिल की तरफ देख रहे हैं। तो हम लग रहा है कि हम आर्ट ऑफ लिविंग भूलकर हम आर्ट ऑफ एग्जिस्टिंग की तरफ प्रयास कर रहे हैं। A very few of us have really cultivated that technique, which is called the art of living. The reason for this is that life today has become very artificial.
man never stops to consider that he may have gone too far by ignoring his natural resources and by depending on artificial means. Living by artificial means gradually decreases natural resistance, and this obsession makes modern man suffer more and more. हमारी जो रेजिस्टेंस पावर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि हम प्रकृति और प्राकृतिक चीजों से दूर होते जा रहे हैं। अगर हम देखें, जितने भी मौसम आते थे उसमें मौसमी सब्जियां, मौसमी फल उपलब्ध रहते थे। आज बहुत सारे मौसमी फल, मौसमी सब्जियां उपलब्ध नहीं है। हम देखते थे इन दिनों में आड़ू बहुत आयत से होते थे, सहतूत होते थे, लोकाट होते थे, लेकिन आज ये देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। और जो चीजें उपलब्ध है वो कितनी नेचुरल है, कितनी ऑर्गेनिक है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसमें हम लोगों का क्या दोष है? हम वी आर सफरिंग, वी आर द सफरिंग स्पीसीज। एंड द यंग जनरेशन का क्या इसमें रोल है? क्यों उन्हें इतना सफर करना पड़ रहा है? इट्स रियली अ $multi क्वेश्चन। If we read more articles, even Bill Gates has warned us that there might be more serious diseases are coming than this corona. इस कोरोना से भी ज्यादा भयंकर बीमारियां आने को तैयार हैं। And the reason is that we have destroyed the nature. हमने हमारी सनातन सभ्यता संस्कृति में भगवान सत्वयन हुआ। वैसे भूमि, गैसे गगन, वासे वायु, नैसे नीर, उसको हमने भगवान बनाया, उसे हमने भगवान मानकर पूजा। आज हम भूमि की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वायु पोल्यूटेड हो चुकी है, पानी पोल्यूटेड हो चुका है, पेड़ हम काट चुके हैं। तो हम किस तरह की दौड़ में हम बढ़ना चाहते हैं, कितना हम पैसा कमाना चाहते हैं, और उस पैसे का क्या रोल हमने देखा है कोरोना पीरियड में कि लोग पैसा लेके घूम रहे हैं और एक ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। So what's the use of that money that we are not able to survive, we are not able to sustain our lives? So that is the question before you. If we read more articles, I have read those articles and try to present before you the real scenario. Humanity will be finished if we fail to drastically change the food system in response to the coronavirus pandemic and the climate crisis. कोरोना वायरस में लगा था कि हम शायद जाग गए हैं, बातें होने लगी थी कि प्रदूषण खत्म हो गया है, पहाड़ की चोटियां नजर आने लगी हैं, लेकिन उसके बाद हम और ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं। और जैसे शुतुरमुर्ग अपनी गर्दन रेत में दबा लेता और सोचता है कि आने वाला खतरा समाप्त हो गया है, हम लोग सब शुतुरमुर्ग बन गए और अपनी गर्दनें हमने अपने अपने सेल्फिश नीड्स में हमने दबा दी। इसी में मैं कोट करना चाहूंगा Jane Goodall. He has written in the Guardian newspaper, and she blamed the emergence of COVID-19 on the over-exploitation of the natural world, which has seen forest cut down, species made extinct, and natural habitat destroyed. I am quoting from that article written by Jane Goodall. We have brought this on ourselves because of our absolute disrespect for animals and the environment, our disrespect for wild animals, and our disrespect for the farmed animals has created this situation where diseases can spill over to the infect human beings. आज हम देख रहे हैं किस तरह से बंदर मारे फिर रहे हैं। बहुत सारी मानवीय प्रजाति, ह्यूमन लिविंग बींग्स प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं, पेड़ पौधे नष्ट हम कर चुके हैं। हम किस तरह की इस प्रगति को चाहते हैं और हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ये हमारा प्रश्न है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे मानव भी अपने अंत की तरफ, we are progressing very fast and we are progressing towards our destruction. We have to think about it. अगर हमें देखना है तो एक चीज और हमें देखनी होगी, everything is coming from television, from advertisements. In this way we have become the unpaid employees of these corporations. ये कहेंगे खड़े होइए तो हम खड़े, हमें को खड़ा होना पड़ेगा। ये कहें कि लॉकडाउन लगाइए तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। ये कहें तो बूस्टर डोज लीजिए तो बूस्टर डोज लेनी पड़ेगी। ये कहें तो मास्क लगाइए तो मास्क लगाना पड़ेगा। Means our resistance power, we are losing our resistance power daily. आरओ की अगर आप बात करें तो घरों में आरओ लगे हुए हैं, हमें उसको कितने पॉइंट पे रखना है, कितना कैल्शियम मिनरल हम ले रहे हैं, ये हमको नहीं पता। आज ये स्थिति, आदमी गिर जाता है तो तुरंत उसकी हड्डी टूट जाती है। वही आरओ कंपनी कैल्शियम की गोली भी बना रही है, जो आरओ बना रही है वही कैल्शियम की गोली भी बना रही है। साथ साथ ये हमको देखना होगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। हम अपनी एजुकेशन पूरी करें या अपने आप को बचाएं या पैसा कमाएं या इस दौड़ में शामिल हो। These are the questions before our youth, and I do feel that our youth is under much pressure
इसके लिए वो जो है नशे की आगोश में है, क्योंकि पेरेंट्स आर नॉट गिविंग मच टाइम टू देम, इन इंस्टीट्यूशंस देयर सो मच लोड ऑफ स्टडी, कट थ्रोट कंपटीशन जारी है। आज आप देखिए जगह जगह खो खो पे जो है छोटे छोटी जगह पे स्टूडेंट जाके नशे की चीज यूज कर रहे हैं, शराब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और स्टूडेंट जो है अपने आप को भूलना चाह रहा है, क्योंकि प्रकृति के पास जाने का उसके पास समय ही नहीं रह गया है। पहले हम क्या करते थे, छुट्टियों में अपने मामा मामी दादा दादी के घर पे जाया करते थे, और कितने पेड़ों पे चढ़ चढ़ के हम खुश हुआ करते थे, खेला करते थे, नदियों के किनारे हम जाके हमको अच्छा लगता था। बट वी हैव फॉरगॉटन ऑल दीज थिंग्स, नाउ वी आर busy in taking the selfies. We are living in this artificial world of ourselves. We are busy in taking the selfies. We are not living in the real world. So we have to awake ourselves. We have to think, where are the questions, what is our future, how we can survive, how we can sustain. These are the real questions before our youth, which we have to think in a very serious manner. No government is going to do anything if we rise ourselves up. Swami Vivekanand ji ne to ye kaha hai, rise, awake and stop not till you have gained your goal. So that time has come. You have to make yourself awake and aware what is going on. You are not just a commodity. आप commodity नहीं है. You are not a number. You are human beings. You have a heart. You have a body. You have a soul. You have a human heart to feel. So we have to revive those human sensations. Our human sensations are dying every day. We are seeing how people are driving in a hurry. They are not caring the other fellow travelers. They are just thinking they are in a big car, so they are a big boss. If there is a big car before them, they are thinking in an inferior way. So their life is just swinging between inferiority complex and superiority complex. Their life is not balanced. We have to make our life balanced. I would like to quote few more things. Jane Goodall has said the same thing later on. If we do not do things differently, we are finished. We can't go on very much longer like this. साफ लिखा है, अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो बहुत दूर, बहुत ज्यादा, बहुत लंबा नहीं जा पाएंगे। ये आज हमारे सामने आज भी यही प्रश्न है। हम भले ही खुश होते रहे कि कोविड तो चला गया। अरे कोविड कहाँ चला गया? आज पेड़ नहीं है सांस लेने के लिए, फ्रेश ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। फ्रेश ऑक्सीजन नहीं है तो किस पे प्रभाव होगा? आपके फेफड़े बैठेंगे, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म होगा, आपके हार्ट में ब्लॉकेज होगा। वो कहाँ से आएंगी दवाइयाँ? वो तो कोरोना पहले ही मौजूद है और एवर परमानेंट रहेगा अगर हम लोगों ने कुछ मिलके नहीं किया प्रयास। I would like to quote few more things which I have noted down. There were few more environment scientists which has time to time has said that we have to raise ourselves, our awareness. But there is another magazine, EcoWatch, and in that magazine, I'm quoting from that magazine, future pandemics are on the horizon if mankind does not stop it. अगर हम इसी तरह चलते रहे तो इंतजार करिए, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी और पैंडेमिक्स भी और आने वाले हैं। I'm quoting from this magazine. There is a single species that is responsible for COVID-19 pandemic is us, ourselves. मानव प्रजाति है जो जिम्मेदार है। As with the climate and biodiversity crisis, recent pandemics are a direct consequence of human activity, particularly our global financial and economic system based on a limited paradigm that prizes economic growth at any cost. हमें तो economic growth चाहिए at any cost. We have a small window of opportunity in overcoming the challenges of the current crisis to avoid sowing the seeds of future ones. Report on biodiversity and ecosystem. 1 million species of plants and animals are at the risk of extinction within decades. Government needs to sustainable and nature positive initiatives. Government को लेने पड़ेंगे, कुछ sustainable management के प्रयास करने पड़ेंगे और कुछ initiatives लेने पड़ेंगे. Greed for allowing microbes that lead to novel diseases to jump from animals to humans. It is the time to relax environmental standards and to prop up industries such as intensive agriculture, long distance transportation. And there is another thing which I am seeing, then there are so many, we are cutting the trees in the name of making the roads.
millions of trees have been cut. We are not caring that that tree is a living being. It is giving us not only the oxygen, it is giving us the wood, it is giving us the fruits, it is giving us the flowers. But we are just thinking that if we cut that tree, how much money we are going to get. Your money is useless. Your money, by your money, you cannot even purchase few grams of oxygen. You have seen it in your COVID-19 period. You're taking millions of money with yourself. You're wandering from here and there, and you're not able to get a cylinder of oxygen. So these are the questions. पेड़ हमने काट दिए, प्रकृति को नष्ट कर दिया, और वो प्रोसेस चल रही है लगातार, और हम कह रहे हैं कि हमने तो बहुत बड़ी तरक्की कर ली है. And there are so many policies of the government that needs to be changed. There is another scientist, Joachim Spangenberg, is an ecologist and vice president of Sustainable Europe Research Institute. I'm quoting from him. We are creating this situation, not the animals. Animals को तो हमने कोई पेड़ काटते हुए नहीं देखा है. किसी शेर को देखा है आपने कोई पेड़ काटते हुए या किसी प्रकृति को नष्ट करते हुए? ये तो मानव को ही हमने देखा है कि वो पेड़ काट रहा है, और जिसकी छाया में बैठा है उसी की जो है क्या कहते हैं कुल्हाड़ी में उसी की लकड़ी को यूज कर रहा है और उसी पेड़ को काट रहा है. We are creating this situation, not the animals. By disrupting ecosystem, we have created these conditions. As people move further into the territories of wild animals to clear forests and raise livestock hunt and extract resources, we are increasingly exposed to the pathogens that normally never leave the places and bodies they inhabited. अंदर हम जा रहे हैं उसके पैथोजेंस हम एडॉप्ट कर रहे हैं, और पैथोजन से हमारे अंदर वो आ रही हैं बीमारियां धीरे धीरे. पीछे भी हमने देखा है जीका, HIV, एड्स, स्वाइन फ्लू, इबोला, ये आते रहे वायरस और हम सोए बैठे रहे. एक के बाद एक वायरस आते रहे, स्वाइन फ्लू, चिकन फ्लू और पता नहीं कौन कौन से फ्लू आते रहे, और हम सोचते रहे कि हम तो बहुत अच्छा जी रहे हैं, बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं, बहुत बड़ी कार में घूम रहे हैं, बहुत बड़े बंगलों में रह रहे हैं, बहुत बड़े ऑफिस में बैठे हैं. But we don't know what is going to happen in future. This is the progress that we are not. हम आज अगर 30-40 साल पहले देखें तो गाँव में कोई डॉक्टर नहीं होता था, कोई मेडिकल स्टोर भी नहीं होता था, क्योंकि because they don't need the medicine, they are healthy enough. इतनी उनकी healthy resistance power होती थी, they don't need the doctors. रोज रोज जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी. क्या वो प्रोग्रेस थी कि आज प्रोग्रेस है? आज देखिए हमारे घरों के पास खुलते खुलते मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल गए हैं. सबसे अगर हम घर के पास सबसे नजदीक पाएंगे तो मेडिकल स्टोर पाएंगे, मंदिर नहीं पाएंगे. तो क्या ये प्रोग्रेस है? क्या वो प्रोग्रेस थी जब हमें जरूरत नहीं थी दवाइयों की और नर्सिंग होम्स की? ये मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ. ये प्रोग्रेस है कि हमें रोज जाके रोज एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं कि फुल बॉडी चेकअप ₹999, और हमें ये नहीं पता कौन सी मशीनों से वो फुल बॉडी चेकअप हो रहा है और कितना ऑथेंटिक है ये भी नहीं पता. और हर मशीन की कैपेसिटी होती है, इतने सारे टेस्ट हो, आपको लगता है कि इतने सारे जो लेबोरेटरीज में टेस्ट किए जाते हैं वो कितने सही होते हैं? आप अपने टेस्ट करा के देखिए, 3 लेबोरेटरीज में अलग अलग मिलेगा. So we have to rise ourselves. We have to create the awareness. My grandfather was a great Ayurvedic doctor, and he made me learn to follow Ayurveda, to follow homeopathic medicines. आज भी ले रहे हैं, आज भी बना लेते हैं हम घर पे. आज भी हम छोटी मोटी चीजें होती हैं तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. लेकिन आज हम देख रहे हैं नई पीढ़ी जो शायद एक स्टेटस सिंबल समझ रही है. डॉक्टर के पास गए, 2000 रुपए की फीस ली, अरे नंबर ही नहीं आता है, 2 दिन में तो नंबर आया, फिर उसने 5 टेस्ट लिख दिए लेबोरेटरीज के, वो दिल्ली में हो रहे हैं और हम तो ठीक है. कुछ दिनों बाद पता चला कि वो टेस्ट कितने सही थे ये कहना बड़ा मुश्किल है. So these are the questions. Examples of emergence of Nipah virus in Malaysia in the late 1990s, where deforestation drove fruit bats from the forest to the human beings, to the pigs, and from pigs to the human beings. The bats often carry pathogens that don't bother them, but in this case, the pigs came in contact with the bat droppings, saliva, they became infected, and from pigs, the virus came into human beings. There are so many wet markets. They are incubator of the emergence of infectious diseases like COVID-19, SARS, COVID-2 emergence in the wet market at Wuhan, China. Spangenberg says strict regulations for live animal markets is
is again saying we are part of nature, we are part of the ecosystem, we are our health linked to the health of the wildlife. हमारे शरीर में भी देखिए तो वही 70% जल मिलेगा जो कि बाहरी वातावरण में। आज देखिए ग्लोबली क्या है, पृथ्वी पर 70% जल है, तो हमारे शरीर में 70% जल है। वहां जो प्रकृति को हमने नष्ट किया तो यहाँ हमारी ह्यूमन नेचर नष्ट होनी है। So we are in this, we are destroying ourselves, we are destroying nature, we are destroying ourselves. Rising temperatures and damaging corals in Australia and intense cyclones and warm water has caused intense damage recent systems. If we look back, अगर हम देखें तो बहुत सारे आज भी हमारे सामने क्वेश्चन है। राइजिंग टेम्परेचर आज भी बढ़ रहा है। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें दिया हुआ है कि अगर 0.5 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ जाता है तो जितने भी एंटार्क्टिक की जो बर्फ वो पिघल जाएगी और जो है सी लेवल बढ़ जाएगा, जिसमें श्रीलंका, बर्मा और बांग्लादेश जैसे देश डूबने की कगार पे पहुंच जाएंगे। स्पीसीज बहुत तेजी से नष्ट हो रही हैं और हम कह रहे हैं कि हमने तो बहुत तरक्की कर ली है। अकॉर्डिंग टू CNN, the earth and its inhabitants face तीन ग्लोबल क्राइसिस, पैंडेमिक क्राइसिस, क्लाइमेट क्राइसिस एंड बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस। 3 क्राइसिस आज हमारे सामने हैं। हम बड़े खुश हो जाते हैं, आज बूस्टर डोज लिए ये करके हम डालेंगे फोटो फेसबुक पे, 15 दिन बाद डालेंगे सॉरी मुझे तो जो है कोरोना हो गया। वो ऐसी लाइफ हम क्यों जाए? वी नीड सस्टेन आवरसेल्फ, वी नीड सस्टेन आवर हेल्थ, वी नीड नेचर। आज नेचर है तो हम हैं। हमारी जो प्रगति हुई है वो नेचर से हुई है। हमने एसी रूम में बैठ के प्रगति नहीं की है, हमने नेचर के साथ खेल खेल के हम बड़े हुए हैं। If we keep on encroaching in the nature, we keep on destroying the trees, nature, plants. It's really very so. There are so many other Copenhagen climate conference हुई, पेरिस जेनेवा कन्वेंशन हुई, लेकिन कोई उसका रिजल्ट नहीं निकला। डेवलपिंग कंट्रीज बैन, डेवलप्ड कंट्रीज ने कहा कि तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है मीथेन गैस छोड़ रहे हैं, प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, और एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप चलता रहा और इन पेरिस और जेनेवा कन्वेंशन का कोई रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि आज के नेता अपनी कुर्सी को बचाने में ज्यादा और जनता को बचाने में कम उनका योगदान है। हालांकि ये बड़े बड़े वादे और ये सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं स्थिति बहुत अच्छी नहीं मैं कह सकता हूँ। अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स आप रोज चेक करें, एक सर्वे करें कि आपके घर में कितने लोग कितने दिन में डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कितनी दवाइयां वो खा रहे हैं, कितना आपकी इनकम सैलरी में से कितना पैसा मेडिकल में खर्च होता है, कितना एजुकेशन में खर्च हो रहा है, तो आपको लगेगा कि वी आर द अनपेड एम्प्लॉइज ऑफ दीज कॉर्पोरेशंस। हम तो उन्हीं के लिए कमा रहे हैं, आधा हमारी सैलरी तो जो है दवाइयों और उसी में जा रही है। हमें जागना पड़ेगा। अगर हमें अपनी सनातन सभ्यता संस्कृति की तरफ देखें तो उन्होंने विश्व शांति की जो कल्पना की, आंतरिक शांति, पृथ्वी शांति, शांति देव शांति, वनस्पतिया शांति, कि सब जगह शांति हो, एंड सर्वे भवन तो सुखी न, कि सब लोग खुशी रहें, खुश रहें। खुश कब लाएंगे? जब वो स्वस्थ रहें। हेल्थ इज वेल्थ। और हम क्या है? वी आर अर्निंग वेल्थ एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। हमें पैसा चाहिए, हेल्थ नहीं चाहिए। ये दीज आर द क्वेश्चंस। आई थिंक वी आर नॉट टू ब्लेम आवर यूथ। उन्हें जो दिख रहा है वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन शायद अगर हम उनके साथ मिलके कुछ प्रयास करें, कुछ छोटा मोटा प्रयास हो सकता है। हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। कुछ कविताएं भी मैं अपनी पढ़ना चाहूंगा, समय ज्यादा नहीं लूंगा। कुछ कविताएं भी मैंने लिखी थी कविता। आओ लौट चले, आओ अब लौट चले उस दिशा में जिस दिशा से हम आए हैं। उस जीवन में था गो गंगा गायत्री, गो माता थी, गंगा माता थी, गायत्री का हम पाठ करते थे। सत्य सादगी सदाचार, अब तो है बस छल कपट और भ्रष्टाचार। दौड़ लगी हुई है, कौन किससे पैसा लूटे, कौन कितना भ्रष्टाचार करे। अभी मध्य प्रदेश में एक IAS जो है मैडम, उनके घर में 2.5 करोड़ कैश मिला है जिसके ऊपर वो सोती। इस पैसे का हम क्या करें? आखिर में तो हमें यही छोड़ के जाना है। हमारे लिए शब्द प्रयोग होता है निधन, यानी धन रहित। आखिर में तो हमें निधन, हमारा निधन ही होना है। आओ चले उस महकते चहकते वातावरण में, फैली रहती थी जहां मानवता की खुशबू, फैला था जहां प्रेम, श्रद्धा व भक्ति भाव, जहां था प्रकृति का एक छत्र रास।
नाम नहीं था कहीं भी प्रदूषण का, आओ लौट चले उस दिशा में जहां से हम आए। लौटना तो हमको पड़ेगा ही, क्योंकि जिस तेजी से हम इस प्रोग्रेस में चल रहे हैं बहुत ज्यादा दूर हम नहीं जा पाएंगे। बहुत ज्यादा वी कैन नॉट सस्टेन वेरी लॉन्ग, वी कैन नॉट सर्वाइव वेरी लॉन्ग। so many questions, so many issues are before us, health issues, so many other problems, and I would request, हमने सब लोगों ने मिलकर एक प्रयास किया है कि अगर हमारे पास जगह है तो उसमें कुछ हम मौसमी फल हम बो सकते हैं। अगर घर में जगह नहीं है तो 15-20 अब गमले ले आए, उसमें भी हम सब्जियां बो सकते हैं। उससे थोड़ी बहुत फ्रेश एयर मिलेगी और ऑर्गेनिक सब्जियां भी हमको मिल सकती हैं। टोमेटो, ब्रिंजल और बहुत सारे लेडीज फिंगर, ये सब हमने गमलों में उगाई है। और आज देखा है कि घर की जो सब्जियां हैं वो मार्केट की सब्जियों से ज्यादा टेस्टी और ऑर्गेनिक और फ्रूटफुल होती है। तो उस तरफ हमें प्रयास करना पड़ेगा। वी हैव टू मेक आवर एफर्ट्स, अदरवाइज आवर लाइफ हैज बिकम एम्प्टी विदाउट ड्रग्स एंड डॉक्टर्स। हमें लगता है कि हमारा जीवन ही नहीं है बिना डॉक्टर के, बिना दवाइयों के, बिना फुल बॉडी चेकअप के। हमें इस जाल से निकलना पड़ेगा, तब then we can sustain ourselves, otherwise the web is going much deeper, much harder, much difficult, and this youth से मैं बात कर रहा हूँ, I am really very sad for them, they have to go, नशे के आगोश में उन्हें जाना पड़ता है अपने आप को, अपने दबाव को भुलाने के लिए। पढ़ाई का प्रेशर, सामाजिक जो कट थोट कंपटीशन चल रहा है पैसा कमाने का, उसका दबाव, क्या बनना है उसका दबाव, अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना है उसका दबाव। और इस दबाव में रह के वो इतने टूट रहे हैं कि वो नशे की आगोश में पहुंच जाते हैं। मैं तो अपने स्टूडेंट से अक्सर बात करता हूँ, अपने लेक्चर के बाद हमेशा 10 मिनट देता हूँ कि आपने ये कपड़े पहने हैं तो क्यों पहने हैं, ये हेयर कट ऐसा यूज किया है तो क्यों किया है, ये बैग पे क्या लिखा है अंग्रेजी में, आपके शर्ट पे क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है। ये मैं हमेशा उनसे बात करता हूँ, अच्छा लगता है। और मुझे आज आपसे बात करना भी बहुत अच्छा लग रहा है। प्रयास करेंगे मिलकर। मैडम कैरोलिन भी हमारे साथ हैं, हम लोगों ने मिलकर दोनों ने काफ़ी लेक्चर्स दिए, वेबिनार्स किए। कोरोना के कारण अब पिछले 2-3 सालों से इंडिया नहीं आ रही है, नहीं तो हमेशा कार्यक्रम करते थे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। और हमेशा हमारा टारगेट यूथ रहता था, इस यूथ को कैसे हम स्वामी विवेकानंद की तरह जगाएं और हनुमान जी की तरह जो अपनी शक्ति भूल गए हैं वो पुनः जागृत हों, उन्हें उनके अंदर इतनी शक्ति हो, उन्हें किसी नशे की आवश्यकता ना पड़े, अपने अंदर उनके अंदर इतनी प्योरिटी ऑफ हार्ट हो, इतने ह्यूमन सेंसेशंस हो कि समाज एक बदला हुआ समाज हमें दिखाई दे। I would like to end with my poem from Love, and as thought about it with love, positivity and courage. Dark night will be आप हंसेंगे तो आपका नजरिया बदल जाएगा इस संसार को देखने का, और संसार आपको देखेगा तो उसका भी नजरिया बदल जाएगा। आपको दुखी देखेगा तो लोग खुश होंगे, अरे बहुत अच्छा दुखी है। आप खुश रहेंगे तो सभी को खुशी होगी। The dark night will disappear within a glittering dawn. The world will change with your love. Open all your eyes with positivity. The ferocious storm will change into a cool breeze. एक भयानक तूफान भी एक सुबह की महकती चहकती हवा में बदल जाएगा अगर आप इसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चहकते रहे। The flowers of feeling will open and blossom. The vines of love will ever grow strong. Consciousness of prayer shines upon the darkness of night. The dark night will disappear within a glittering dawn. The world will change with your love. The world will change with your love. आपकी हंसी के साथ ये संसार भी बदल जाएगा। और इस यूथ को मैं एक और मैसेज देना चाहूंगा, आपको अगर किसी भी चीज में कठिनाई हो, कभी भी आप अपने आप को प्रेशराइज महसूस करें तो नशे के आगोश की तरफ मत जाएं। कैरोलिन से संपर्क करें या मेरे से आप कर लें, मैं अपना नंबर बोल देता हूँ, या मैडम है परवेश लता जी, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे आप संपर्क करें। ये मेरा हाथ जोड़ के आपसे आग्रह है कि कभी भी आप नशे की तरफ, उस अंधी गली की तरफ ना जाएं जिसमें लौट आना आपके लिए संभव ना हो।
Please note my mobile number. It is 9219. Madam, आप type कर देंगी क्या? Yes, sir. Yes, sir. I am typing 9219 710 874. मैसेज कर दीजिए मैम सभी को. Yes, sir. Sir, It's really a beginning. हमें नहीं लगता कि ये वेबिनार से तो एक शुरुआत है, and we will do more webinars or meetings with the youth. यूथ फेस्टिवल होता है, लेकिन वही शोर शराबा, खाना पीना, उसके बाद हम सोचते ही नहीं कि हम एक शरीर से ज्यादा भी कुछ है. हम एक आत्मा है, हम एक महकते हुए फूल हैं. हमारी एक जिम्मेदारी है समाज के प्रति. हमारे घर के लोग हमें कितनी केयर से पौधे की तरह पाल रहे हैं. और आज मैं देखता हूँ सड़कों पे किस तरह से यूथ मोटरसाइकिल चला रहा है और कितनी कैजुअलिटीज हो रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें माँ बाप ने तो मोटरसाइकिल लेके दे दी या कार लेके दे दी, लेकिन चलाना नहीं सिखाया. वो जैसे चल रहे हैं, स्पीड से चल रहे हैं तो चल रहे हैं. तो यही प्रयास रहेगा हमारा कि हम जो है यूथ से मिलके हम प्रयास करें. हमारा प्रयास चलता रहेगा. एंड आई थैंक यू ऑल. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार. थैंक यू डॉक्टर राम शर्मा सर. बहुत ही यथार्थ के धरातल पर आपने बात रखी है, और बहुत जरूरी है कि हम बहुत रूट लेवल से हम शुरू करें, इन समस्याओं को उठाड़ें और कुछ इस तरह की सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिस लाएं जो बेनिफिशियल हो. एंड बहुत ही आपने मोटिवेशनल जो ये आपने आज बात रखी है रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल सस्टेनेबल दिस मैनेजमेंट एंड द प्रॉब्लम्स आल्सो. और एक जो महामारी का जो ये रूप चला है और इससे हम बहुत ज्यादा त्रस्त हैं और अभी भी उससे जूझ ही रहे हैं. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये चला गया है, अभी हमारी लाइफ में शामिल हो गया और ये रहेगा. इसकी अलग अलग फॉर्म्स आती रहेंगी, लेकिन हम इसको कैसे कोप अप करें, ये बहुत बड़ा सवाल है. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के, एंड several questions are answered by Professor Caroline Hissing already on the chat box. Recently, I have just have a question from Shivani Sharma that reduce, recycle paper recycling. Unwanted paper will reduce the raw material demand for paper production, and so conserving trees and forest ecosystem. And from online assignments to writing e-exams, and thanks to the advent of technology, paper is not something that is necessary anymore. And by making use of smart technology that are available today, we can effortlessly shift away from paper-based activities at all levels. Go plastic free. तो ये आपसे मोटिवेट हुई और इसने बात रखी है और बहुत सही बात रखी गई है इसमें. Now I would like to invite participants to ask question. Yes, Dr. Bradati. Yes, thank you, ma'am. Good evening to all. Good evening, Ram sir, and good morning, Caroline, Professor Caroline. Thank you for the wonderful insights that you have given to us. Very wonderfully explained about the tradition, culture of India. I think both of you stressed a lot on that, and we do really have a lot of things. So a part of where Swami Dayanand Saraswati ji had said, once go back to the Vedas. So I think maybe we will have to go back actually. Now here on this occasion, I want to ask a little bit a different question on sustainable management. My question is to Professor Caroline. So ma'am, actually, I was a little curious about part where we have these SDG goals. A part of it is poverty, and its interrelation with the environmental or sustainable development and management. So we know about our country. So what in your opinion is a contrast of America, as we know of it is as a developed country? So or the marginalized, socially marginalized groups and the poverty that we find. Yeah, may I answer the question before? Yes, yes, sir. Please. I've been to United States so many times. Yes, sir. And Caroline is coming to India from last 12 years, and we have been collaborating from 12 years.
I asked one of my friend is KCUs, and he run 3 computer companies successfully and is one of the richest persons of California, but now he is running his own temple now. So I asked him 10 years before one question when he came to India. I asked him how you liked Bharat or India. He said, I have not seen Bharat anywhere. I'm seeing America. I am seeing here America that was 60 years back. आज जो भारतवर्ष है वो 60 साल पहले अमेरिका था. And slowly we are progressing on those things which they are living and we are adopting. वो चीजें छोड़ रहे हैं और हम उन चीजों को ग्रहण कर रहे हैं. यहाँ भी जो है ओल्ड एज होम्स बन गए हैं, फैमिली स्ट्रक्चर्स को हम तोड़ दिया है, कारों में ड्राइव थ्रू लेके हम खुश हो रहे हैं, पिज्जा हट्स में बैठ के फोटो हम डाल रहे हैं फेसबुक पर. और अमेरिका में जो है सरस्वती देवी की मूर्ति रख कर वो लोग खुश हो रहे हैं, अपने नाम गंगानाथ, गंगा देवी, जमुना देवी रख रहे हैं. और रख के वो वहाँ का स्टेटस सिंबल है, यहाँ का स्टेटस सिंबल लॉस एंजलिस की शर्ट पहनना, नाइक के जूते पहनना, रीबॉक की वो करना, पिज्जा हट्स की KFC जाना. ये सब किसने बनाए हैं? ये हमारे सामने प्रश्न है कि हम किसको आपको दिखाना है. आपका जीवन आपका है, आपको दिखाना किसे? और आपका अगर कोई ये आभासी जो जीवन आप जी रहे हैं यूथ, वो किसके लिए? आज हम देख रहे हैं पहाड़ी पे जाके फोटो लेने लगते हैं. अरे भाई पहले प्रकृति का आनंद लीजिए, फोटो लेना 1-2 लीजिए, लेकिन ये नहीं कि उसको आप यही नहीं देख रहे सेल्फी लेते लेते पहाड़ी से नीचे गिर गए और मर गए. ये आभासी दुनिया किस लिए? आप दिखाना किसे चाहते हैं? कहाँ आपकी जो है नंबरिंग आपकी हो कहाँ रही है? पहले ये आभासी दुनिया नहीं थी, हम रियल वर्ल्ड में जी रहे थे. लेकिन ये जो आभासी वर्ल्ड हमने क्रिएट किया है, आज भी मैं एक क्वेश्चन और आपको बता रहा हूँ, मैंने जो था इसके साथ आंसर दूंगा. फेसबुक अमेरिका में यूज हो रहा, बनाया, इन्वेंशन हुई, लेकिन कितने लोग अमेरिका में यूज कर रहे हैं फेसबुक का? आप कैरोलिन से पूछिएगा. वहां का आदमी ज्यादा समय फेसबुक पे नहीं रहता है, व्हाट्सएप पे नहीं रहता है, अखबार ज्यादा समय नहीं देखता है, टीवी चैनल नहीं देखता है इतने ज्यादा जितना हम लोग अपना दिमाग खराब करते हैं देख देख के, क्योंकि वहां से वो चीजें आ रही हैं. आज RO ले लीजिए, ये कूलर आ गया है, ये दवाई आ गई है, ये शर्ट आ गई है, ये शर्ट पे ये फ्री है. वेयर आर आवर माइंड्स? हमारे दिमाग का है, हम अपने दिमाग से चल कर रहे हैं. हम तो जो सामने से देख रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं. आज ये बाइक आ गई है, आज ये कार का मॉडल आ गया, आज ये घड़ी का आ गया है, आज नई दुकान खुल गई है. Now I ask Caroline to answer, to proceed further. Yeah. Okay, thank you, Dhanyavad. I think the question was how I have been in India and I understand the differences. Hello, are you there? Can you hear me? Am I audible? Yes, you are audible. Okay, and so I agree with Casey Hughes. When I go to India, I'm shocked. Sometimes even in the Himalayas, I see that they're selling Coca-Cola and they're selling Lay's potato chips, even in the high Himalayan villages. And I understand that there's these changes going on because when my Indian students come here, some of them cook their own food and they stay vegetarian. Other Indian students, they go to McDonald's and eat hamburgers. So I know that's a choice all Indian youth have. When my Indian students, when I first traveled with them to India, I was going with their grandmothers to the temples and they were going to the malls and they were eating at all the fast food places like Pizza Hut, and they were eating at KFC, and they were eating at Nestle's chocolate cake and all these things they were eating. And their grandmothers were cooking the food and going to the vegetables. And they told my student's grandmother told me to eat Mosambi juice, take Mosambi juice for my stomach. And I learned a lot from the grandmothers. The grandmothers of India are still trying to teach their grandchildren and keep the traditions.
And so I tell the Indian youth, listen to your grandmother, listen to your grandmother. And your grandmother and your grandfathers have the culture, and they remember the old ways. So respect their old ways. If you eat KFC and McDonald's all the time, you're lost. If you're drinking Coca-Cola all the time, that will affect your brain. So you need to remember that your culture has solved all those problems. The Ayurvedic medicine and all of those things, the yoga system, it's spreading other parts of the world now, yoga and Ayurveda. And so in India, yes, young people need to decide what you're going to do. Are you going to just imitate America? I don't think that would be especially good. So yeah, Indian youth will figure it out. You're very smart. For one thing, I know you're extremely smart. You're smarter than the Chinese. Believe me, I had Chinese students and Indian students in my class. Who were the smartest students? Indians. So you're very smart. You have very good families and good parents and good grandparents. So you have this wonderful ancient culture, the Vedic culture. So you have everything you need. You have wonderful schools. You have very good teachers and professors. And I think, you will solve the problems. I really think that's true. I really believe Indian run companies are going to solve all these problems. And all of you are, very motivated. You're very serious. And every Indian student I've ever met was very driven to succeed. And I understood why, because I met their parents. Many of my Indian students said they talked to their mother every night. They were talking to their mother on Skype or on WhatsApp. And every Indian student I've ever met has incredible strength, physical strength, and mental strength. So that's a testament to the Indian culture. And so Indian students do very well in America. They rise to the top of their companies. We have a vice president who's an Indian American woman, Kamala Harris. This is how Indians are. Indians are very smart. And I think you're going to solve all the problems. Yes, thank you, Professor Caroline. And you have answered the question of Pascalia very well. Pascalia, are you there? Hello, Pascalia. Yes, Pascalia is there. I think. So very well explained the queries. And there are other queries also. One question from Dr. Meera Mishra, that any pedagogical intervention for ensuring sustainable practices for elementary students. Any pedagogical intervention for ensuring sustainable practice for elementary students. Are you asking me that question? Yes. Any pedagogical intervention for ensuring sustainable practices for elementary students. I'm not sure I understand. Dr. Ram, can you tell me? Though I say love for nature, you cannot be taught. Five-star in AC rooms or 5-star hotels, you cannot teach the elementary school to go towards nature. You have to take them to the nature, and then the lesson or the teaching of nature will start. Yes. We have to get through our life. Yes. Okay. नहीं होगा कि हम बोल दिया AC room में बैठ के कि हाँ ये पेड़ लगा. That you have explained. Yes. Any other question from the participant if you want to ask? Otherwise, I will go for the end of this webinar. Yes. Anyone?
So now, thank you so much. And I feel the biggest challenge in this new century is to take an idea that seems abstract, that is a sustainable development and sustainable management, and turn it into reality for the world's people. That is the basic question. कैसे हम इसको reality में बदले, ये सबसे बड़ा सवाल है. और कैसे जो है हम ground root पर काम करें, वो सबसे बड़ा सवाल है. जो क्वेश्चन अभी डॉक्टर राम शर्मा ने यहाँ पर रेज भी किए हैं, और उन पर ध्यान देना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. It is very necessary and beautifully and very in a very elaborative and in a very real way you have explained all the things to the participant. I think our participants are and thanks to schedule to take out your precious time from your tight schedule. We heartily thanks to both speakers, that Professor Caroline. Really, I am very motivated from Professor Caroline and Dr. Ram Sharma sir. Now, I would like to on everyone camera for a combined take. Yes, please, everyone on your camera. I would like to request to everyone. Dr. Pratati, please take a screenshot. Yes, everyone, please on your camera. All faculty members and students are requested to on your camera. Dr. Pradati, have you taken the screenshot? No? So just please everyone on your camera. So Dr. Pradati, have you taken the screenshot? Okay. Thank you, Dr. Pradati. And at last, I would like to thank from my bottom of heart that you have taken a precious time from your tight schedule, and you really encourage our participant and us also. And we would like to hear from you again and soon. So signing off on behalf of School of Education, GD Goenka University. Yes, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you.